Hello everyone. Today we will continue our first chapter, synthetic fiber and plastics. Actually, in first lecture we have seen about the different types of fibers, different types of materials, etc. Natural raw materials, synthetic materials, etc. After this, polymer, monomer, and then polymerization. Today, I will explain synthetic fibers, their types and how they are made. First of all, as we know that natural fibers, example of some natural fibers are wool, silk, cotton, jute. Wool and silk is obtained from animals and cotton and jute obtained from plants. But why we need to make a synthetic fiber? Actually, natural fiber is very expensive and it is not available everywhere in proper amount, in proper quantity. That's why we need to make a fiber which have the property almost similar to natural fibers. So synthetic fibers are obtained from where? Synthetic fibers are mostly obtained from petroleum. Petroleum is crude oil. Synthetic fibers are mostly obtained from petroleum. They are made by chemical processes in industries by humans. As we know that synthetic fiber is a polymer and it is made by the process of polymerization. And polymerization is what? Chemical process. In industry or industrial plant, synthetic fibers are made. Now classification or types of synthetic fibers. Mainly 4 types of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester and acrylic. These are the 4 most popular synthetic fibers. First of all, rayon. What is rayon? But before the study of rayon, we should know about silk. Actually, silk is a natural fiber, we have seen, and obtained from where? Silkworm, that is from animals. Silk is a natural fiber with a beautiful texture, but it is expensive. सिल्क तो नेचुरल फाइबर है, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर भी होता है, शाइन करता है बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल टेक्सचर है, बट वो क्या है? एक्सपेंसिव है. सो हम लोग एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर बनाना चाहेंगे जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका टेक्सचर सिल्क से क्या हो? मिलता जुलता हो. और वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? रेयॉन. See here. So with similar texture means similar property, similar sign. So with similar texture, synthetic fiber rayon is made. कौन बना? Rayon बना. Rayon is also called artificial silk. Rayon को हम लोग और क्या कहते हैं? Artificial silk. Artificial means what? Man-made. और silk तो समझ रहे हैं, मतलब ये man-made silk है एक तरह से. उस नेचुरल सिल्क का अल्टरनेट है, ये सब्स्टिट्यूट है. मतलब हम लोग उसकी जगह भी इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, इसको पॉपुलर कर रहे हैं. ओके, सो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विथ अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, बट इट इज एक्सपेंसिव. काफी कॉस्टली है ये. सो विथ सिमिलर टेक्सचर, सिंथेटिक फाइबर रेयॉन इज मेड. Rayon is also called artificial silk. One question is given in your book. Why rayon is called artificial silk? Answer will be, rayon is called artificial silk because it shines like silk. It has the texture of silk. That's why rayon is called what? Artificial silk. Okay, now one question arises here is, how rayon is made? How rayon is made? One more important thing. Rayon is also called semi-synthetic fiber. It is not given in your book, but you should have in your mind. Please keep it. Rayon is also called what? Artificial silk.
Rayon is also called semi-synthetic fiber. Semi means fully नहीं, आधा, and synthetic fiber. इसको fully हम लोग synthetic fiber नहीं बोल सकते, because इसका जो raw material है वो natural है, cellulose. वो natural है, वो plant से आता है. Now we will see how rayon is made. So first of all, rayon is made from the wood pulp. Rayon is made from wood pulp. First of all, wood pulp is dissolved in alkaline solution. बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं. किसको? वुड पल्प को. When we dissolve wood pulp in alkaline solution, we obtain a thick liquid. गाढ़ा लिक्विड हमें मिलेगा एक. We obtain a thick liquid. This thick liquid will pass through a device which have so many teeny holes. Which हम लोग एक डिवाइस से पास कराएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट से पास कराएंगे जिसमें बहुत सारे टीनी होल्स होंगे. एक्चुअली क्यों हम लोग पास कराते हैं? ताकि जो गाढ़ा लिक्विड है उस होल से पास करे तो एक लंबा फाइबर का फॉर्म एक्वायर कर सके. So wood pulp is obtained. Sorry, wood pulp is dissolved first of all in alkaline solution. Then we obtain a thick liquid, and this thick liquid, गाढ़ा liquid, is then passed through a device, through a instrument which have so many tiny holes. Now we will obtain fibers. But this fiber is not so strong. It is weak in strength. So for hardening this fiber, we give bath of sulfuric acid. हम लोग इस फाइबर को क्या देंगे, क्या प्रोवाइड कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का बाथ प्रोवाइड. बाथ मतलब यहाँ पे नहाना नहीं हुआ. बाथ का मतलब यहाँ पे हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर से पास कराएंगे. सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रखेंगे, उसको हिट करेंगे और वहां से जो वेपर उठेगा उससे हम लोग इसको कांटेक्ट में लाएंगे. किसको? फाइबर्स को. नाउ फाइबर is getting hard. Okay, after this we will obtain yarn, and then yarn is woven into cloths. फाइबर को जब स्पून करेंगे तो yarn मिलेगा, and yarn को जब ये woven करेंगे, इसको woven करेंगे मतलब perpendicularly and horizontally, then we will obtain cloths. So rayon is made by these processes. You can keep all these points in your mind like this way. Next, rayon is also called regenerated. Re means दोबारा. Rayon is also called regenerated fiber. Rayon को हम लोग क्या कहते हैं? Regenerated fiber, मतलब दोबारा फाइबर बना है. Why? Because original raw material, that is cellulose, is broken down and then reformed. First of all, cellulose टूटता है और then वो reform होता है, दोबारा बनता है. That's why we will call it what? Regenerated fiber. So rayon is also called artificial silk. Rayon is called semi-synthetic fiber. Rayon is called regenerated fiber. So here हमने देखा कि वो कैसे बनता है. Now we will see what are the properties of rayon and what are the different uses of rayon. One thing should be in your mind that property is different than its uses. If in exam question asks about only property, then you have to write only property, not use. Use is different other than use is other than what? Properties. वो अलग है उससे. Okay. Now properties.
properties of rayon. So first properties of rayon is what? Easy to dye, strong लिख देते हैं पहले, क्या? Strong. It is strong fiber. Then after we will write point wise. We will write point. Okay. Point लिख लेते हैं. Strong. Second, easy to dye. Easy to dye means what? हम लोग उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं. किसको? रेयन को. रेड, येलो, ग्रीन, हम लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको कोट कर सकते हैं कलर से. मतलब उसका कलर चढ़ जाएगा, उसको कोटिंग हो जाएगा उसको. तो इजी टू डाई, स्ट्रॉन्ग, इजी टू डाई, एब्जॉर्ब्स वाटर और स्वेट एंड स्वेट. Absorbs strong, easy to dye, absorbs water and sweet, etc. So all these things are the properties of rayon. After this, we will write uses of rayon. Uses of rayon. So see here, first is it is used to make suits, ties, jackets, sports wear, etc. ध्यान दीजिएगा. एंड पॉइंट नंबर 2, होम फर्निशिंग. होम फर्निशिंग में यूज किया जाता है. होम फर्निशिंग आइटम. होम फर्निशिंग तो जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं फर्निशिंग के लिए डिफरेंट आइटम. होम फर्निशिंग होता है क्या? बेडशीट, कर्टेन्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स, बेड स्प्रेड्स, ब्लैंकेट, एक्सेट्रा. बहुत ज्यादा याद नहीं करना है. Okay, so rayon has this property. वो strong होता है, easy to dye होता है, and absorbs water and sweat होता है. ये property काफी important है, absorbs water and sweat, because इसका जो बनेगा कपड़ा, इसका जो क्लॉथ बनेगा rayon का, वो sweat को absorb कर सकता है, तो हम लोग थोड़ा comfortable feel करेंगे. So when we wear cloths of rayon, then it will be comfortable. Then now, my dear children, we will move ahead. Our second synthetic fiber, second type of synthetic fiber is nylon. Actually, nylon is itself made from these three words: New York, London. Means nylon is first marketed in New York and London. Okay. Nylon is synthetic fiber, first synthetic fiber which is made entirely of chemicals. नायलॉन ही हमारा एक पहला सिंथेटिक फाइबर है जो फुल्ली किससे बना है? केमिकल से बना है और इंडस्ट्री में बना है, इंडस्ट्रियल प्लांट में बना है. इससे पहले जब लोगों ने रेयन देखा था, रेयन इज नॉट इंटायरली मेड फ्रॉम केमिकल्स. वी नो कि उसका रॉ मटेरियल सेलुलोज होता है. बट हियर first synthetic fiber is a rayon which is made entirely of chemicals. जो फुल्ली बना है किससे? केमिकल से बना है. And properties of nylon we can see here that nylon is very strong and elastic. Elastic means what? When we apply some force, then its shape will change, and when we remove this force, then it's regain their original shape or original structure. So strong and elastic like rubber, light and wrinkle resistant. Nylon is
लाइट इन वेट, हल्का होता है, एंड रिंकल रेसिस्टेंट। रिंकल रेसिस्टेंस मींस व्हाट? दे आर क्रीज रेसिस्टेंट। क्रीज रेसिस्टेंट मींस दे नीड टू लेस आयरनिंग। उनमें हमको आयरन करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके कपड़े में। किसके? नायलॉन का कपड़ा में ज्यादा हमें आयरन करने की जरूरत नहीं होगी। उसका क्रीज जो है वो टूटेगा नहीं, वो क्रीज मेंटेन रहेगा। दैट्स इट इज कॉल्ड क्या? रिंकल रेसिस्टेंट। थर्ड, वियर रेसिस्टेंट। वियर रेसिस्टेंट मींस व्हाट? लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये काफी दिनों तक चलेगा, जल्दी इसका कपड़ा फटे उठेगा नहीं जल्दी। इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको? वियर रेसिस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? इजी टू वॉश एंड ड्राई। नायलॉन का जो भी क्लॉथ्स होगा, जो भी मटेरियल्स होंगे, वो उनको वॉश करना और ड्राई करना काफी इजी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये काफी कम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर पाते हैं? एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसीलिए नायलॉन का बना हुआ कपड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, बिकॉज वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस, दे शाइन, वो चमकते हैं। मींस नायलॉन इज व्हाट? लस्ट्रस। So these are the 6 properties of nylon. These are not uses. These are their characteristics property. Characteristics कहो या क्या कहो इसका? Property कहो. These are the characteristics of nylon, and due to all these characteristics, they are used. Nylon is used for making different things. Now, what are the different uses of nylon? First use of nylon is it is used in making garments like sari. साड़ी में हम लोग इसको यूज करते हैं, किसका? नायलॉन का। Why? Because due to wear resistant property. ये लॉन्ग लास्टिंग है, साड़ी जल्दी फटता नहीं है। जब वो उसकी जो थिकनेस होती है वो काफी कम होती है, फिर भी वो लंबा चलता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। Why? Because they are made from where? Nylon. Second use of nylon is it is very strong, so used in making ropes. हिल क्लाइंबिंग रोप्स जो होता है, माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो ये रोप बनता है, उसमें भी ये यूज होता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, टेंट्स, फिशिंग नेट्स एंड पैरासूट्स एक्सेट्रा। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग होता है, हमने देखा था, और ये वियर रेसिस्टेंट होता है, इसलिए ये वाला। तो किस प्रॉपर्टी के कारण कौन सा यूज, ये देखना है। किस प्रॉपर्टी से कौन सा यूज लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, हमें इसको ध्यान से देखना है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, टेंट्स, फिशिंग नेट्स एंड पैरासूट्स एक्सेट्रा। थर्ड यूज ऑफ नायलॉन इज इट हैज गुड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मींस व्हाट? लचीला, उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इट हैज गुड इलास्टिसिटी, सो यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। सॉक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सॉक्स समझ रहे हैं? नेक्स्ट, फोर्थ यूज, it is also used to make toothbrushes, combs, zip fasteners and machine parts. तो हम लोगों ने देखा कि नायलॉन का काफी ज्यादा यूज है ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी के लिए हम लोग इसका किसमें यूज करते हैं? रोप बनाने में। ये रोप बनाने में हिल क्लाइंबिंग रोप्स जो होते हैं वो भी इसी के बने हुए थे। किसका? नायलॉन का ही। ऐसा कहा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट रोप ऑफ नायलॉन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयरन ऑफ सेम थिकनेस। आयरन का जितना मजबूत हो सकता है, आयरन उतना ही अधिक मजबूत कौन है? नायलॉन भी। ऐसा बिलीव किया गया है, लेकिन थिकनेस सेम होनी चाहिए दोनों की। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या यूजेस हैं। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी हैव सीन today two topics. First was rayon and second was what? Nylon. हमने अभी तक क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर में? फर्स्ट ऑफ ऑल की what are synthetic fibers, what are their classification and why we need to make a synthetic fiber. हमें जरूरत ही क्यों हुई synthetic fiber बनाने की? Because natural fiber is here, but it is very expensive and it is not available in all the places in equal quantity. कहीं पे कम है, कहीं ज्यादा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ज्यादा पड़ जाता है, तो टोटली मिला के वो कॉस्टली पड़ जाता है। That's why we need to make a synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर की क्वांटिटी पूरी तरह से बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम लोग सिंथेटिक फाइबर को ही क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमने देखा, we have seen first synthetic fiber rayon,
फोर्थ सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, भी सिंथेटिक फाइबर ही है। रेयॉन इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Yes, it is not fully synthetic fiber. It is semi-synthetic fiber because its raw material is cellulose, which is obtained from plant. That's why it is called what? Semi-synthetic fiber. लेकिन ये synthetic fiber के अंदर नहीं आएगा। Synthetic rayon is called artificial silk. Rayon is called semi-synthetic fiber. Rayon is called regenerated fiber. And how rayon is made? How rayon is made? Rayon is made from wood pulp. First of all, wood pulp is dissolved in alkaline solution, basic solution. Then after we will obtain a thick liquid. This thick liquid will pass through a device or instruments which have so many tiny holes in it. After passing through these tiny holes, this thick liquid will convert it into a long rope called fiber. But this fiber is not so strong that can be used for making cloth. So first of all, this fiber is hardened. Why and how? First of all, this fiber is hardened by passing through the vapor of sulfuric acid. It takes the bath of sulfuric acid. After taking the bath of sulfuric acid, we will obtain yarn. Yarn will be hardened as compared to fiber, and then after it will be woven into what? Cloths. So इस चीज को दिमाग में सेट करके रखेंगे। Why rayon is called regenerated fiber? Rayon is called regenerated fiber because first of all its raw material is broken down or decomposed. That is, cellulose will be decomposed and then reformed. फिर से नया बनेगा. That's why it is called what? Regenerated fiber. After this, we have seen second synthetic fiber, nylon. Nylon is first synthetic fiber which is made entirely from chemicals. फुल्ली ये किससे बना हुआ है? केमिकल से। इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ। Nylon have also different properties like strong and elastic. इसको आप दो प्रॉपर्टी बना सकते हो, दो पॉइंट बना सकते हो। पहला में स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड में क्या बना सकते हो? इलास्टिक। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, लाइट एंड wrinkle resistant, wear resistant and easy to wash and dry. So we should focus on these words: wrinkle resistant and wear resistant. Once again, wrinkle resistant means crease resistant, means cloths or garments of nylon needs very less ironing on it. उसको आयरन करने की कम जरूरत पड़ेगी, उसका क्रीज जो है वो टूटेगा नहीं। Wear resistant means will be long lasting, लंबा चलेगा, जल्दी फटेगा नहीं, and easy to wash and dry. Also it absorbs very little water and due to this property, ये प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है क्लॉथ्स के लिए। क्लॉथ्स हम लोग बनाएंगे तो हमारे जो बॉडी से हम लोग जो परस्पायर करते हैं, परस्पायर मीन्स व्हाट? स्वेटिंग, जो पसीना निकलता है बॉडी से, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कौन? नायलॉन। और हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ये बैड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, लस्ट्रस। क्या हुआ? लस्ट्रस मतलब दे हैव शाइन। आफ्टर दिस वी हैव सीन यूजेस ऑफ नायलॉन। इट इज यूज्ड for making sari due to its wear resistant property. It is long lasting. Then after we have seen nylon is used to making ropes, chains, fishing nets, parachutes, etc. Finally, it is also used to make toothbrushes, combs, zip fasteners and machine parts. Okay dear children, now I hope आप लोग समझे होंगे इस चीज को। आप लोग साथ साथ अपना स्कूल बुक जो लिविंग साइंस है उसको भी फॉलो करते रहिए। आपको ये सारी चीजें वहां पे सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन मैंने इसको ब्रीफ करने का कोशिश किया है, संक्षेप में लिखने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया है। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।